students, welcome back to my lectures of class 10th physics. We are studying the chapter eye and the colorful world. In the previous two videos of this chapter, we have seen the different components of the eye and also the different terms related with the eye. Now here in this video, we will see the most important topic of this chapter, that is the defects of vision, and we will see here myopia. Now what that myopia is? This myopia, first of all, also called as the short-sightedness or near-sightedness. Now here the most important thing is to remember the name and to remember that what defect is. Okay, so here as this name is very short, that is myopia, so you can remember that as the name is short, its name is short-sightedness, and here as it is short-sightedness, it is also called as near-sightedness. अब यहाँ पर जो इसका नाम है, that particular thing can be done by that eye. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इस डिफेक्ट के अंदर जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो एक ह्यूमन आई देख सकती है, बट द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन. ये आप सिर्फ इस नाम से याद रख सकते हो. So what this defect is? It is that defect in which the eye can see clearly the objects lying at the short distance from it, but the far of objects cannot be seen clearly by the myopic eye. पास की चीजें दिख जाती है लेकिन दूर की जो भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखते हैं. Okay, this is what the defect myopia is, that is myopia or short-sightedness or near-sightedness. Okay, now here this is a diagram for a normal human eye. यहाँ पर ये जो लाइट रेज आ रही है, these are coming from infinite, or you can say the object is kept at infinite. For a normal human eye, the far point is at infinite. मतलब infinite का ऑब्जेक्ट भी एक नॉर्मल आई देख सकता है और एक नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर पे फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई वो भी देख सकता है. मतलब दोनों के केस में जो इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना पे. इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, देन यू कैन से दैट द इमेज कैन बी सीन बाय अ आई. मतलब नॉर्मल आई दोनों टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक फार पॉइंट पे रखा हुआ है और एक नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, दोनों को देख सकता है. कब? जब उसकी इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना के ऊपर. नाउ बट इफ वी हैव अ डिफेक्टेड आई, दैट इज a myopic eye, then for the nearby objects, as we have seen here, the myopic eye can see the nearby objects clearly. मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नियर पॉइंट पे रखे हुए हैं उन सब की इमेज रेटिना पे बन जाएगी, as you can see here. But the objects which are at far off, but the objects which are at the infinite, उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है. कहां पर बन रही है? इट इज फॉर्मिंग समवेयर इन बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंस. तो अगर ये इमेज रेटिना पे नहीं बनी, मतलब क्या है? यू कैन नॉट सी दिस क्लियरली. सो दिस इज व्हाट अ रे डायग्राम फॉर अ डिफेक्टेड मायोपिक आई इज. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट. सो आफ्टर लुकिंग एट the ray diagram for a normal human eye and a myopic eye, we'll see the two possible causes of this defect. वो हम सिर्फ इस डायग्राम के अंदर से देख सकते हैं. Okay, so the first possible cause is the decrease in focal length of the eye lens. मतलब eye lens का एक focal length होगा. Now what this focal length is? How we have defined the focal length? That the light rays which are parallel to principal axis, after refraction they meet at a particular point, that is its principal focus, and that distance is focal length. अब यहाँ पर देखो, the light ray which is coming from infinite, that is parallel, after refraction they are not meeting at the retina. कहाँ पर मिल रही है? They are meeting at some point which is between the eye lens and the retina. मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि पहले ये जो पॉइंट है वो यहाँ होगा, लेकिन बाद में कहां पर आ गया? ये बीच में आ गया. मतलब कह सकते हो इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया? कम हो गया. सो एज द फोकल लेंथ गेट्स रिड्यूस्ड, सो दिस डिफेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द आई. सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल कॉज, दैट इज द डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हेन द आई लेंस इज फुली रिलैक्स. ओके, नाउ द सेकंड डिफेक्ट यू कैन सी हियर, दैट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर पहले जो आई बॉल है वो इतना छोटा रहा होगा. दिस इज टू स्मॉल, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस अज्यूम कि यहां पर इस पॉइंट पर क्या है? पहले रेटिना रहा होगा, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट क्या हुआ कि यहां पर जो रेटिना वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया. सो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल एज इफ द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड. तो यहां पर क्या है? या तो फोकल लेंथ कम हुई होगी या फिर जो साइज है आई बॉल की वो बढ़ गई होगी. इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द इमेज बिटवीन द रेटिना एंड द आई लेंस. तो यहाँ पर किसी भी कारण से अगर आपको जो इमेज है कहां पर बने? रेटिना और
आई लेंस के बीच में बने, तब आप कह सकते हो कि वहां पर जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है. ओके, नाउ इफ वी हैव दिस डिफेक्ट, वी शुड हैव सम करेक्शंस that by which we can correct this defect. So how we can correct this defect? So how we can correct this defect? If we can make this point here, जो इमेज यहां पर बन रही है, अगर हम उस इमेज को यहां पर बना दें तो ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा, this defect can be overcome. Now how? अगर मैं यहां पर ये जो लाइट रेज है, if they are getting converged, अगर मैं क्या करूं, if I diverge these light rays, क्या करूंगा, मैं इनको डाइवर्स कर दूंगा कि ये यहां पर डाइवर्स होके फिर आगे जाके कहीं पर मिले. तो अगर मुझे इन दोनों लाइट रेज को डाइवर्स करना है, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज अ कॉन्केव लेंस. क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या होता है, अ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस दैट कैन डाइवर्स द लाइट रेज व्हिच आर फॉलिंग ऑन इट. तो अगर मैं यहां पर एक कॉन्केव लेंस लगाऊं जिसकी वजह से ये लाइट रेज क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, then we can say we can correct this defect myopia. Now we will see through the ray diagrams that how we can correct this defect myopia. Here we have seen that if we can use a concave lens, then we can diverge the light rays and then they can meet at the retina in order to correct this defect. Now we have kept a lens where the light rays are coming from infinite. So these are the light rays which are coming from infinite. Then after refraction they gets diverged. तो यहाँ पर लाइट रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्ज होने के बाद वापस क्या हो गई, ये कन्वर्ज हो गई एंड देन दे विल मीट ऑन दी रेटिना. ओके, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे. बट व्हेन वी विल एक्सटेंड दिस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज वी हैव अ कॉन्केव लेंस दैट ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा होगा कि इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, द ऑब्जेक्ट विच इज इनफाइनाइट, उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, विच इज फॉर्मिंग एट द एफ dash. Okay, so by using the concave lens we can form the image on the retina. So here in this case the object is at infinite. Okay, now for this lens the image will be formed at this point f dash. This f dash will be the new far point. Okay, now for this lens the image is formed at f dash. So I can write this v is equals to x, but it is negative. Okay, because light rays are coming from this side and we are measuring from the optical center and we are assuming f to be the focal length of this concave lens. मतलब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है that to correct the myopia, which lens and of how much power we have to use. Now here in this case we can use the lens formula. So using lens formula we can write 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. What is the value of v? That is 1 by minus x minus 1 by infinite is equals to 1 by f. Okay, now 1 by infinite that is equals to 0. So I can write 1 by minus x is equals to 1 by f. So I can write f is equals to minus x. मतलब यहाँ पर जितना नया far point होगा जिस distance पर, that will be its focal length. So you can directly write this f is equals to minus x. In this way we can calculate the focal length of the lens which is required to correct the defect myopia. So this is all about the defect myopia, about its definition, about its ray diagram, about its correction, and how to calculate the focal length when we have the new far of point.